Good morning, dear children. How are you today? I hope you all are good at your home. So let's see first day and date. So this is your whiteboard, children. So today is 2nd of September 2021. So 9th is for September month. Okay. And the day is Thursday. 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 So हम क्या पढ़े इंग्लिश में? We are doing letter M. So this is capital M, children. This is small m, right? So capital M कैसे बनाते हैं? One standing line, one slanting line, down, up slanting line, and one more standing line. This is capital M. And for small m, children, start from here. Small standing line, then U curve, one more curve. So this is the formation of small m, and the phonic sound is right? So आपने देखा मैम ने जो m लेटर है वो किस पे बनाया है, किस पे लिखा है? Yes, this is a square, है ना? Square है. Square क्या होता है चिल्ड्रन? जिसकी 4 sides होती हैं. काउंट करें. 1, 2, 3 and 4. A square has 4 sides and 4 corners. ये तो मैथ में भी पढ़ा हमने. 1, 2, 3 and 4. And all sides are equal. सारी sides equal होती हैं. ठीक है? ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर. इसीलिए इसको स्क्वायर बोलते हैं. So आज जो हमारी वर्कशीट है वो भी यही है चिल्ड्रन. हमने क्या करना है? Your worksheet is on page number 4545. So you all have to draw squares, ठीक है? Around capital M and small m. Then we have to join them. Like हमने जैसे triangle किया था, वैसे आज हम square बनाएंगे M letters के around means इर्द गिर्द. M letter को उसके अंदर करना हमने square को. फिर सारे squares बना के हम join करेंगे, right? So this is your worksheet. So let's do this worksheet and then we have to trace and write letter M also. एक बार देखिए बोर्ड पे M letter कैसे बनाना है. So children, for making capital M we have to make standing line from red line to second blue line and one slanting line up to down from blue line, from red line to blue line, then a slanting line and one more standing line. We'll draw once again. Write once again one standing line, one slanting line up to down, and one slanting line down to up, and one standing line again. So this is the formation of capital M. जो ये slanting lines है children वो हम blue line तक लेके आएंगे, ठीक है? So this is the formation of capital M. For small m children, we have to make one standing line between the two blue lines. Then we have to go up and then 2 curves up to down. So this is the formation of small m. Right children? So ये भी हम worksheet करेंगे अपनी trace and write. Okay? So let's do our worksheets. So children, this is your worksheet. Draw squares around capital M and small m, then join them as shown. So पहले हम recognize करेंगे capital M and small m को, then हम square बनाएंगे उसके around. Around means उसके इर्द गिर्द, ठीक है? Like जैसे ये बनाया हुआ. So this is small m children. आप देखो square बनाया है. Then this is capital M. Then this is capital M children. Then we have to make a square. So square has 4 sides. 1, 2, 3 and 4. So this is a square. And now this is small m. You again have to make a square. 1, 2, 3 and 4. A square has 4 sides and 4 corners. Right? So this is capital M. Make a square. Okay. This is again capital M. 1, 2, 3 and 4. So this is a square.
Then okay, so all done. Now we have to match corner to corner. So match this corner to this square to this square, this square to this corner to this, and we have to join this also. Okay, so in this way you all have to finish this worksheet. And now children, we have to trace and write capital M and small m. हमने बोर्ड पे भी देखा कैसे बनाना है. So we have to make one standing line from red line to blue line, and then one slanting line up to down, and one more slanting line down to up, and again one standing line. So this is the formation of capital M. आप देखोगे एरोज दिए गए हैं. एरोज इज फॉर द डायरेक्शन. सो दिस जिस डायरेक्शन में एरो दिया है हमने उसी डायरेक्शन में फॉर्मेशन बनानी है. ओके, नाउ फ्रॉम स्मॉल m चिल्ड्रन, सो फर्स्ट मेक वन स्टैंडिंग लाइन बिटवीन द टू ब्लू लाइन्स, देन वी हैव टू गो बैक अप, देन डाउन, make a curve, then again up and down. So this is the formation of small m children. Okay, capital M, small m, baby m and mama m. ये mama m है, ये baby m है. Okay, now m, what is the phonic sound m of m? It is mango. मास्क. और आज मैम ने हिंदी की कविता में शेर का मास्क लेके आपको कविता करवाई है. आप सब वो कविता भी याद करोगे. एंड एम इज फॉर मंकी भी होता है. मैम ने बताया आपको. आप देखना चाहोगे मंकी? हमारे स्कूल में भी मंकी हैं. सो मैम विल शो यू मंकी. हमारे स्कूल में पार्क है, पार्क में ट्री है, ट्री के ऊपर मंकी है. सो मैम विल शो यू. आप देखना चाहोगे? ओके, सो दिस इज स्मॉल m. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट आर द थिंग्स जो हमें m लेटर से दिख रही हैं? व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? दिस इज अ मंकी. And ma'am has told you, where does the monkey live? The monkey lives on the tree. And अब देखो baby monkey भी है उसके साथ. Okay children, so now you all have to do your worksheets like this. सुंदर सुंदर करनी है और अपनी worksheet करके मैम को सेंड करनी है. Thank you children. Have a nice day. Bye bye.